Good morning, students. I hope you are done with your homework of inventory evaluation. I am good, and I hope you are also good. So let's start with today's session. First, we are going to start with the basic rules of accounts. Say good morning, फटाफट फटाफट बेटा आ जाइए. Good morning बोल दीजिए. Yes. So first, traditional approach, personal account, real account, nominal account. Personal account talks about personal, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach, asset debit balance, liability credit, expense debit, income credit, and capital account credit balance. Then, beta, we have started with the journal entries. Ledger we have finished. Then we have started with trial balance, subsidiary books, then rectification of errors and cash book. These are the units which we covered in the unit chapter number 2. Is very important. So, friends, now what is important? Inventory valuation. You remember inventory valuation? What we have seen till now? Yes, meaning of inventory we have seen. For manufacturer and for trader, for manufacturer it is raw material WIP and finished goods. Yes, beta. Prince Kumar, I am new in the live classes, so welcome to ICAI classes, beta. Good morning, Snemoy, Shiva Gupta ji, Himanshu ji, Renuka ji, Dheeraj, Aditya Kumar, Anusha, yes, Saman ji, Neha, beta, Neha Kumari, good morning, beta, good morning, good morning, good morning to all of you. So what are the types of, सर मैं एग्जाम फॉर्म फिल कर रही हूँ, अगर रिकॉर्ड क्लास देखूं क्या? बेटा देखिए, अभी लाइव क्लास, एग्जाम फॉर्म तो बाद में भी भर सकते हो. वाई आर यू मिसिंग लाइव क्लास? चलिए. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू is there are three types of inventory. For manufacturer, there is raw material, WIP and finished goods. For raw material, which word we used? चलो जल्दी से बताओ. For raw material हमने क्या word यूज किया था? फटाफट बोलिए बेटा. यस प्रिंस. चलो. रॉ मटेरियल. यस. रॉ मटेरियल क्या है जल्दी से बताइए. रॉ मटेरियल के लिए विच वर्ड यू आर यूजिंग बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए. चलो फटाफट बोलिए, रॉ मटेरियल के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप लोग? रॉ मटेरियल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? यस, वेरी गुड. रॉ मटेरियल इज कंज्यूम, कंज्यूम होता है रॉ मटेरियल के लिए. देन WIP के लिए प्रोडक्शन एंड फॉर फिनिश गुड्स इट इज COGS. सो ये आपको सबको याद है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा एंड दिस विल बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड फॉर ट्रेडर के लिए रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. Inventory valuation, why it is important, we have seen that. Basis cost of purchase, purchase price, non-recoverable duties and other taxes, other expenditure directly attributable. Less trade discount, rebates, duty drawbacks. I hope you are done with this homework. Overheads, fixed overhead, absorb in between. One minute, बेटा. परसों इन्वेंटरी का अलग PPT था बेटा, एक ही मिनट रुको. एक ही मिनट.
हाँ जी बेटा। अभी हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल वी हैव डन विथ सीओजीएस वगैरह हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस वी हैव डन विथ द कैलकुलेशंस एंड देन इन्वेंटरी टेकिंग वी हैव डन विथ। हाँ जी बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू सी। चलो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ अभी चलो ध्यान दीजिए फटाफट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर देयर इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन? मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट इज बेटा इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड एंड बाय प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड। चलो ध्यान दीजिए। हाँ सर, एबनॉर्मल लॉस वाज रिमेनिंग। ठीक है। सो एबनॉर्मल लॉस, यस बेटा वी हैव टू डू दैट एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। रॉ मटेरियल के लिए कंज्यूम यूज किया। चलो मैं फटाफट रिवाइज करवा के दूं क्या आपको? यू वांट टू डू रिवीजन? फटाफट फटाफट। So inventory valuation, determination of income done in liquidation basis based on the inventory valuation, cost of purchase, cost of conversion, other cost, exclusion, normal loss versus abnormal loss, net realizer, periodic versus perpetual we have done with. Yes, and today we are going to see some illustrations also. अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था? क्विकली रिवाइज करके देता हूं आपको। ओके, रॉ मटेरियल, यस फटाफट देखिए। रॉ मटेरियल के लिए वी यूज द वर्ड कंजम्पशन। दिस इज हाउ यू टू डू योर रिवीजन। डब्ल्यूआईपी के लिए प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स के लिए सीओजीएस। हाँ बेटा, कोल्ड बहुत है मुझे, खांसी और कोल्ड मेरा जा नहीं रहा है पिछले 8 दिन से। यस। देन बेटा कंजम्पशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके। प्रोडक्शन में हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी प्लस कंजम्पशन प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड minus closing WIP, and COGS is opening stock of finished goods plus production minus closing stock of finished goods. You will get, yes. तो ये चीजें याद रखो। Then, yes बेटा। Now the question is, ये तीनों भी आपको समझ में आ गया। The question is that raw material, WIP and finished goods you understood. फिर आपको मैंने बताया था what you will consider: raw material, direct labor, direct expense, and factory overhead. And what you have not considered: administration overhead and selling and distribution overhead. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यस, जल्दी से बताइए। टुडेज एग्जांपल: माय रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 3,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,000। प्रोडक्शन क्वांटिटी, लेट्स सी हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट। 1,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स। वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? चलो जल्दी से बताओ।
हेलो। चलिए स्टार्ट। बहुत खांसी हो गया है। चलिए सो आंसर इज बेटा, यस फटाफट टेल मी व्हाट इज द आंसर। यस, यू विल कंसिडर। सबसे तेज आंसर किसने दिया बेटा? 5 + 3 8 10 15,000। 15,000 फॉर 1,000 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना? करेक्ट आंसर इज 1500। हु आंसर्ड इट वेरी फास्ट? कृतिका, सीआरओ की बच्ची है बेटा। वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड। यस बेटा, सो वेरी गुड। हाँ निखिल हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। यस, सो कृतिका जी, वेरी गुड बेटा। योर आंसर इज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से आई एम फाइंडिंग प्रॉब्लम। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सपोज, यस मधु बट फर्स्ट सेक्शन यही होगा। सपोज 50 यूनिट्स I purchase it for 300 rupees. Normal loss is 10%. Total units lost 8 units. Calculate cost per unit. Cost per unit. Calculate cost per unit. Yes बेटा, चलो बताइए फटाफट। What is the cost per unit? Yes स्वरूप बेटा, very good. I take names of those students who are answering very fast. हर्ष पटेल सर, अकाउंट्स के लिए आपके ऐसे है कि बीओएस के लेक्चर्स देखूं? हाँ बेटा, बड़ा ऑब्वियस। या पिंपरी चिंचवड़ के तो वो बेटा हिंदी में चाहिए रहेगा तो वो अलग है। सो हर्ष पटेल जी, those lectures are freely available and both are good beta. So in English plus Hindi, here in English plus Hindi there is only Hindi. Yes, so what is the cost per unit? Who is answering it very fast? 50 units into 3,300 plus 15,000 cost divided by 45 units minus only 10%. 8 units I won't consider. So correct answer is, yes. Who got the correct answer? Not a single student. The correct answer is 333.33. 333.33. Not a single student got the correct answer. What is the formula? Cost per unit is equal to total cost minus scrap value divided by total units minus normal loss in units. So बेटा total cost कितना है? 300 into 50, 15,000. What is the scrap value? 0. What are total units? 50. And what is normal loss in units? 15 to 10%. 5 units. So your answer is 333.33. Now you got the concept. Chalo, one more question. Now beta, 8 units are damaged. Now try to understand. 8 units are damaged. Normal loss
Out of that, only 5 units. See, now what is the concept? Out of 8 units, normal loss is 5 units. So what are abnormal units, beta? Abnormal units are 3. And these abnormal 3 units are balancing figure. These are recorded at 333.33 rupees. 1000. So abnormal loss is recorded at cost per unit, and normal loss is recorded at scrap value. Here it is 0, so 0 rupees. So what is the difference between normal loss and abnormal loss? Normal loss recorded at scrap value, and abnormal loss are recorded at cost per unit. Total lost units are 8. हाँ बेटा, 8 units lost. But out of 8 units, only 10% we agreed. So only 10% means only 5 units we agreed. Remaining 3 units are called as abnormal loss. Abnormal loss is recorded at cost per unit. Scrap value क्या है sir? Very good. Abnormal loss is recorded at cost per unit. वापस से एक बार. See, 50 units. Scrap मतलब if you are going to sell that damaged part in the market, तो स्क्रैप मतलब भंगार का पैसा बेटा, भंगार का पैसा. ओके, जब आप कोई चीज मतलब भंगार में निकाल दी आपने. स्क्रैप मतलब भंगार मराठी वर्ड है, हिंदी में भी भंगार ही बोलते रहेंगे ना शायद से. सो जो आप लोग भंगार में वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. गॉट द कॉन्सेप्ट? एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट पर यूनिट. Abnormal loss, chalo, write down it in the comment section. Normal loss is recorded at scrap value and abnormal loss is recorded at cost per unit. Should I give you one more question to try? Yes. देखो, out of 50 units, you purchase it at rupees 30. Sorry, 300. So what is your cost? 15,000. But out of 50 units, you are aware that 10% will be normal loss. So 5 units is normal loss. But how many units you बेटा डैमेज कितने मिले? 8 units. आउट ऑफ 8 units आपने कितने units का मन बना लिया था? आपको पता था 5 खराबी निकलेंगे. So 3 units are called as abnormal loss. 3 units को हम लोग क्या बोलते बेटा? It is called as abnormal loss. Got the concept? And 5 units को हम लोग क्या बोलते हैं? This is normal loss. So normal loss versus abnormal loss. Normal loss is recorded at scrap value. हम लोग उसको scrap value पे record करेंगे. And 3 units are recorded at 15,000 divided by 45 because we are aware that 5 units are bad. So this is the cost per unit and I will record 3 units at cost per unit, that is 333.33 rupees. Got the concept now? Easy? Easy है? एक क्वेश्चन और दे दीजिए. वेरी गुड. दिव्या इज सेइंग एक क्वेश्चन और दे दीजिए. चलो. सी बेटा, एक और यूनिट्स. Suppose 500 units are purchased at rupees 12 per unit. And out of 500, 15% is normal loss. And total units lost
80 यूनिट्स. कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस. कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस. यस, बताइए. कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस. कैलकुलेट इट फास्ट. Though you are getting answer in point, beta, it's okay. Though you are getting answer in point, it's okay. Wrong, beta. Anusha, you are wrong. $500 units into 12 is my cost. Divided by 500 units minus 15%. So 425. So 500 divided by 500 into 12 divided by 425. Answer is 14.1176 up to 4 digits. And out of 80 units, you consider 15% is a normal loss. So 75 units, normal loss. So abnormal loss, 5 units. So 70.59. 70.59. So what is the abnormal loss, beta? Yes, Aditya Kumar is correct. Okay. So up to 4 digits you can take. Yes, 75 units is normal loss. Last time, are you going to try it? Last time, beta. Should I give you last question? Normal versus abnormal, very important, beta. Normal loss is always recorded at scrap value, and abnormal loss is always recorded at, yes. ठीक है बेटा, 14.12 you can take. So 5 into 14.12. So here and there, beta, 70.6 is also correct one. No problem. 70, 71, 72 are correct. Don't worry. But up to 4 digits you can take. हिमांशु, बेटा देख बेटा, 500 यूनिट्स मैंने परचेस किए. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी. 500 में से कितने रुपए पे तूने परचेस किए? 12 रुपए. मतलब तेरे जेब से कितना गया बेटा? 6,000 रुपया यू स्पेंड. अभी 500 यूनिट्स में से तू कितने का नुकसान होगा ये पकड़ के चल रहा था? 15%. मतलब 75 यूनिट्स ये तेरे खराबी निकलेंगे. इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस. तो तेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बेटा? 6,000 जेब से गया, पर 500 में से 75 खराब निकलेंगे, ये पता ही था. यू नो ऑलरेडी, अनअवॉइडेबल कि ये खराब ही निकलने वाला है. सो तेरे हाथ में कितने आए बेटा? 425. सो 6,000 डिवाइड बाय 425 कितना आया बेटा? 14.1176. 4 डिजिट्स तक लेने का व्हेन देयर आर कैलकुलेशंस इन पॉइंट्स, डेसिमल्स. अभी तेरे टोटल यूनिट्स खराब कितने निकले? 80 यूनिट्स डैमेज. उसमें से तू पकड़ के कितना चल रहा था? 75 यूनिट्स तो मेरा खराब ही निकलेगा. तो एबनॉर्मल कितना हुआ? मतलब ये 5 एक्स्ट्रा खराब हुए.
ये 5 एक्स्ट्रा खराब हुए। अभी जो एक्स्ट्रा खराब हुए उसको हम लोग 14.1176 से रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्सपेक्ट बताया बेटा। फिर एबनॉर्मल लॉस वेयर टू रिकॉर्ड। Abnormal loss you already recorded in 11 12 standard. Abnormal loss trading account, I will record two purchases 100 units multiplied by, sorry, 500 units multiplied by 500 units multiplied by 12 rupees. So ha, and trading account credit side by abnormal loss, how many units? 5 units. You will record at 70.588. Cost per unit is 14.116. 12 रुपए purchase price. But it is inflated due to normal loss. Normal loss absorbed by good units. Therefore, your price increases. Now, how many abnormal loss था? 75 units normal loss था. नॉर्मल लॉस इज 75 यूनिट्स। कितने में खरीदा था? 12 रुपए में। सी 75 इंटू 12, 900 रुपीज। अभी ये 900 रुपीज ये लॉस हो गया। यस, यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर इट। सो 900 हु विल रिकवर? Good units. Good units. How many good units are there? 425. So 900 divided by 425, 2.1176. So your cost is increased by 12 rupees plus 2.1176. देखो बेटा क्या होता है, एक बार हिंदी में समझ लो। मैंने 500 यूनिट्स कितने रुपए में लिए? 12 रुपए में लिए, बराबर है। पर उसमें से कितने यूनिट्स खराब निकले? 75 यूनिट्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। 15% खराब निकले 80। पर मैं कितने सा एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेरा 75 का नुकसान होने ही वाला है। मुझे पता था कि ये लिया तो ये खराब निकलने ही वाला है। वो नॉर्मल लॉस जो मैंने एक्सपेक्ट करके ही चल रहा था कि मैं सपोज दिन भर में 14 घंटे काम कर रहा हूं। मुझे पता है 2 घंटे ना मेरा टाइम पास होने वाला है। टाइम पास हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर 3 घंटे टाइम पास हुआ। 2 घंटे टाइम पास ये मैं लेके ही चल रहा था 14 आवर्स में से, पर 3 घंटे टाइम पास हुआ तो 1 घंटा इज एबनॉर्मल। 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा किया। एक्स्ट्रा टाइम पास अलाउड नहीं है, तो वो नॉर्मल एस्टिमेटेड है। नॉर्मल मतलब क्या? मैं लेके ही चल रहा था कि 75 यूनिट्स एट 10 रुपीज, 900 का वैसे भी नुकसान होगा। अब ये 900 का नुकसान कौन बेयर करेगा? गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स कितने हैं बचे हुए? 425। सो वो 425 का प्राइस कितने से ऊपर चला गया? 12 रुपए प्लस 2.1176। सर पर ऐसे कैलकुलेट करने का क्या? नहीं। सो हाउ टू कैलकुलेट? इट्स वेरी सिंपल। कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट कितना था? 6000। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 500। उसमें से खराब कितने निकलेंगे? 75। So you will directly get the answer. But what is this meaning? Meaning is very simple. Normal loss is absorbed by good units. Normal loss को कौन absorb कर लेता है? तो normal loss को good units absorb करते हैं। मतलब वो जो एक का 12 रुपए था, 75 यूनिट्स खराब निकलने वाले थे। तो 75 इंटू 12, पर खराब कितने निकले? ऊपर के 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा खराब निकले। तो बेटा वो हमने एस्टिमेट नहीं किया था, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल देने का एंड पी एंड एल के डेबिट में डाल देने का। सो आप जो 11 12 में करते थे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, trading credit P&L debit, you never expected that amount, so that was abnormal loss. उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग क्रेडिट, बिकॉज गुड्स गोज आउट। ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट, एंड लॉस हुआ तो P&L के डेबिट में। अदरवाइज कैश मिला होता, सेल किया होता तो, सो सेकंड इफेक्ट इज इन कैश, बट हियर इट इज लॉस। लॉस है तो P&L के डेबिट में। सो 11 12 की फैकल्टीज यू ऑलवेज टेल यू कि दैट गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग क्रेडिट P&L डेबिट। व्हाट वाज दैट लॉस? इट इज एबनॉर्मल लॉस। टुडे यू गॉट द कॉन्सेप्ट। 11 12 में आपको फैकल्टीज बोलती रहेगी कि एबनॉर्मल लॉस है ना, वो गुड्स लॉस बाय फायर, वो उधर बताओ ट्रेडिंग के क्रेडिट में P&L के डेबिट में। कोई ये नहीं बताया होगा कि वो एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस मींस एक्सपेक्ट के ज्यादा, मतलब यू एक्सपेक्टेड 75 पर 5 आपके एक्स्ट्रा खराब निकले। वो 5 हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलो लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस? यस। ओके, सो यू ओनली टेल मी बेटा,
What is the difference between normal? Now, very clear with the normal loss. So, whenever someone is asking you about normal loss and abnormal loss, what you have to tell them? Normal loss is expected loss. Out of 500, 15% is expected. 75 will be expected. But extra than that, if there is a loss, so 80 units are lost. So 5 units is called as abnormal loss. We pass entry of abnormal loss. हम लोग किसकी एंट्री पास करते हैं? Abnormal loss. Where trading account credit side, P&L account debit side. Only of 5 units. Sir, what about remaining 40, 75 units? It is absorbed by good units. It is absorbed by 425 units. So we won't record normal loss separately. And if we record normal loss, it is recorded at scrap value. कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? जो उससे हमें भंगार में से पैसा आया. For example, if I sell it and I'm getting 2 rupees, so 2 rupees, my cost is 12 rupees. But 2 rupees is a bhangar ka price, scrap ka price. So I will record that 75 units at 2 rupees, 150 rupees. Okay? So scrap value पे record करना है. Scrap value. Yes, beta. Very clear. Beta, normal loss and abnormal loss concept is very important. Yes, very good beta. Lisa Rani, Tambeshwari, Muskan, Kinjal. Very good beta. Yes. Normal loss is recorded at scrap value and abnormal loss is recorded at cost per unit. Clear? Ekdam clear. Very good. Now, see beta, crystal clear हो गया एकदम. Now I am giving you one example. Last example. Suppose 1000 units you bought at rupees 18. Okay. Normal loss 5%. Scrap value rupees 2 per unit. Total loss 70 units. Calculate cost per unit. स्क्रैप वैल्यू भी दिया देखो बेटा. Cost per unit. See who is getting the correct answer. 18 into 1000 minus normal loss is 5%. So 50 units into 2 rupees. Divide by total units are 1000 minus 50. 950. 18.84 to 1. And abnormal loss 70 units में से 50 normal तो 20 abnormal. Abnormal loss is equal to
376.84. 18.8421 is the correct answer. Monisha answered it correctly. सबसे तेज रानी प्रसाद, नहीं उसके भी पहले श्रुति. श्रुति प्लीज टेक अप टू 4 डिजिट्स बेटा. प्लीज टेक अप टू 4 डिजिट्स. यस, टेक अप टू 4 डिजिट्स बेटा. 376.4. वेरी गुड. चलो. ओके, गॉट द कॉन्सेप्ट बेटा. इजी छे. यस. Kritika, cost per unit is wrong beta. I hope you understood your mistakes. Other students? 378.94. ठीक है बेटा नेहा, 2-1 रुपए का डिफरेंस इज ओके. आई डोंट नो व्हाई, but it's okay. 376.84 is a correct answer. You can check it now, no beta. 4 digits तक से. So why are you getting 2 rupees का भी difference? So please check your answers. Yes. Because scrap value beta, scrap value only of those units which are normal loss. तो normal loss कितना है? 50 units. तो scrap value 50 units का ही लेना है. You will consider scrap value of only normal loss. Scrap value only normal loss. बस हो गया बेटा, बहुत क्वेश्चंस कर लिए. नहीं बेटा, प्लीज वॉच दिस करण कुमार, प्लीज वॉच दिस अभी सेशन वंस अगेन. यू हैव टू इंप्रूव योर कैपेबिलिटीज. आपको आपकी एक लेवल से आगे निकलना पड़ेगा. अभी मैं 10 मिनट यही क्वेश्चन लेते बैठूंगा ना बेटा, सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होगा. अभी मैंने इतना डिटेल में लिया हुआ है, एकदम सिंपल है. कॉस्ट को अभी इतना तो समझ लेना रे कि टोटल कॉस्ट मतलब जो जेब से गया. स्क्रैप वैल्यू मतलब जितने यूनिट्स आपने बेचे, वो लॉस हुआ. लॉस ओनली ऑफ नॉर्मल यूनिट्स. 50 यूनिट्स का 2 रुपया मिल रहा है. हाथ में कितने यूनिट्स आए? 950 यूनिट्स. कितना सिंपल है रे, कितना सिंपल है. टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स. पेशेंस मत देखो रे मेरे भाई. 3 क्वेश्चंस लेने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा किधर तो लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं होता है. आप सीए कर रहे हो रे भाई. इतना क्या ये क्या कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू किसकी? पहले ही बताया, नॉर्मल यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू होती है. कितना सिंपल है. स्क्रैप वैल्यू सिर्फ नॉर्मल लॉस की लेने की 50 यूनिट्स. एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 25. फोकस नहीं है. यू आर नॉट गिविंग 100%. You are not focused. That's why their result is only 20%. If you focus on your work, you are not going to fail. Because दिमाग में 10 चीजें चलती है. Whenever I teach, my 100% focus is on my teaching. Whenever I work for my client, I always think only of client. सो चीजें दिमाग में से निकाल दो. Remove it. All your thoughts. Dustbin. My focus, it is simple. Tell to yourself, always simple. Beta, I'm not a cook, but still, when beta I entered into my hotel premises, I always think, because I have never done any course, I never beta, cooking is not my hobby, but beta, if you ask me, what is a proportion of your vegetables
और दैट पाव भाजी. सो आई ऑलवेज टेल टू माई सेल्फ, यस आई कैन डू इट. मैं खुद भी कर सकता हूँ. प्रपोर्शन, मैं मेरे शेफ को पूरा गाइड दे सकता हूँ कि तुझे 3 kgs क्या करना है. तो 3 kgs उसमें से तुझे सपोज वटाना जो रहता है उसको लेना है, 7 किलो का पोटैटो लेना है, 6 kgs तेरे को, ये प्रपोर्शन तो सीख ले सकता हूँ ना भाई. बट जब मैं फोकस करता हूँ ऑन माई वर्क, आई नो आई एम डूइंग दैट वर्क ओनली. नहीं है आप लोगों का वैसा. If you are not getting it after 3 to 4 time explanation, you are not a CS student. Try to understand. And in life, you have to be very focused. If you have some dreams, गुस्सा नहीं हो रहा हो. But once, if I'm explaining this concept in detail, no one will tell you this concept itna detail में, because I'm a costing teacher also, so I know what is the importance of normal loss and abnormal loss. बेटा जितना लॉजिकल मैं स्टडी करवाता हूं ना, मैं लिख के देता हूं, इतना लॉजिकल कोई नहीं करवाएगा. Because I always, beta, I have seen, I never joined any beta ऐसा classes. I always develop myself while passing entry without logic. I never pass a single entry. I always ask to myself why I'm doing this course, and that's why I'm slow chartered account. I'm not saying I'm very, I have seen some merit rankers. Those are like कि yes है ना sir, वो सीख लो. I always ask to myself why I'm doing this work, why I want to learn this chapter. Whenever you watch my session, मैं जब भी आप मेरा सेशन देखते हो, तो first 5 to 10 minutes I always explain you why this chapter in the syllabus. ऐसे ही मजाक है क्या? Normal loss, abnormal loss, why concept is there? Because you are valuing inventory and you may have that, you may expect some losses. Why are you studying like, it's a 100%, it's I'm doing something which is very difficult. You are not doing any difficult course. It's a course which needs only patience. CA teaches us how to keep calm like Dhoni in a pressure situation. Don't get panic. If you are getting panic, better you are not going to do CA course. कुछ नहीं होता है, सब आएगा आपको. Why I'm getting the wrong answer? Ask to yourself. Sir taught us it 3 4 times. Still I'm getting a wrong answer. Means there is something lacking in you. Your focus is not 100%. Still see my performance. I'm telling you that from 10 days I'm not feeling well, but still I'm conducting a session. This is a commitment. मेरे आवाज से समझ गया होगा आपको. ठीक है, चलो भाई. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टुडे स्क्रीनशॉट नंबर 1. एंड नहीं हो रहा है ना बेटा, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. तोड़ना है, फोड़ना है, खत्म करना है, कुछ भी होने दो, लास्ट तक जाके सिखाते रहूंगा मैं. मेन प्रोडक्ट and byproduct. Let's understand it quickly. Now, what is main product? Main product is which is intentionally produced. Okay, for example, sugar. Sugar is intentionally produced. And molasses, मलवा, मराठी में मरी, हिंदी में आई थिंक मलवा, वो जो शुगर केन के बाद जो
चौथा बोल सकते हैं हम लोग, जो रह जाता है, इट इज बाय प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो सोल्ड। प्लाई के बाद जो पार्टिकल बोर्ड बच जाता है, सो मेन प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स वही रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, और एनआरवी। नाउ दिस इज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। See, it might happen that from my pocket I spent rupees 100 for the production. For the production मैं जेब में से 100 रुपीज पे कर रहा हूं, ओके, 100 रुपीज भी पे कर रहा हूं, and NRV means if I'm going to sell it in the market, I'm getting 90 rupees. How much I'm getting? 90 rupees. So how? Competition. It's my lack of planning that I spent extra amount, 100 rupees. But in market, I'm getting only 90. So you're in loss. Yes. I know I'm in loss because my manufacturing cost is more, which is not expected. My competitor, he does not have that much of price cost. That's why he's selling that product, the same product at 90 rupees, for which I incurred 100 rupees. Sir, I left with 500 units. I produced 5,000 units. I left with 500 units. At what value I should record it? You should record it 90 rupees. Why? Because prudence concept. Prudence concept. Prudence means anticipated losses are recorded. Anticipated profits are not recorded. If I record it at 500 into 100, I'm showing my closing stock at the above price. I'm not going to receive that amount. So 500 units में 90 rupees पे बताऊंगा. So I will record it at 45,000 rupees and not 50,000 rupees. Got the concept? मैं कौन से प्राइस पे बताऊंगा बेटा इसको? 45,000 rupees and not 50,000 rupees. So net realizable value means if I'm going realizable means cash. Cash I'm going to receive. हिंदी में बताने वाला हूं सब कुछ. Don't worry. Cash I'm going to receive. It's a realizable value. South Indian students, are you getting this concept? Okay. So cash, whatever I'm going to receive, is called as realizable. Realize matlab cash. And net, see, you have to incur some selling expenses for that. You have to incur some selling expenses for that. For example, if I am selling any product at 95 rupees, but I have to incur some advertisement cost, and that cost me 5 rupees. So in hand, I am getting only 90 rupees. So net means difference. Realizable means difference means selling price minus selling expenses. What is the formula? Selling price minus selling expenses. Sir, normally sales should be higher side, but better wait. Sometime naseeb, okay, your fate is better. It's in bad way. You can say I produced it at 100 rupees, but my selling price is only 90 rupees. Okay, no manufacturer wants to sell the product at below cost. Who is going to sell it? If you buy at rupees 100, then you are going to sell it at 120. Any businessman. But suppose if inventory is non-moving, then better he has to sell it at 90. He wants to remove that stock. कभी कभी स्टॉक को निकालना है, स्टॉक क्लियरेंस, यू नो, स्टॉक क्लियरेंस in mall. Sometimes the product normally which you buy at rupees 1,000, it might happen for stock clearance, they're giving you at 200 rupees, 80% discounts. Why? Because they want to move out of that. सड़ जाएगा वो स्टॉक, पड़े पड़े खराब हो जाएगा. It will get better in bad condition. So instead of that, we will clear it out. So this is why we are selling at below cost sometimes.
due to market conditions or due to better stock clearance. And in that case, you will value your inventory not at cost 100 rupees, but you are valuing at 90 rupees. If you are not sold your product, then better you will record it at below price. And this is a principle as per S2, Accounting Standard 2 gives you this principle, inventory valuation. See our chartered accountants, our ICAI, how beautifully they have derived these values. Okay, cost or NRV, whichever is lower. Why? Because you do not record it at cost. You are not going to receive 100 rupees from the client. Why are you recording at 100 rupees? Client, that customer is giving you only 90 rupees, so record it at 90 rupees. Though my cost is 100, because I will show to my reader, financial reader, what is the actual amount I'm going to receive. If it is not 100 rupees, then why I should record my closing stock at 100? Got the concept? Say yes or no. एक बार हिंदी में समझ लो बेटा, एक बार हिंदी में समझ लो. हाँ बेटा, यस, हिंदी में समझ लो. नित्यश्री अंडरस्टूड इट वेरी वेल. देखो बेटा, मेन प्रोडक्ट मतलब आपका जो गन्ना होता है उससे आप क्या बनाते हो, शुगर. तो शक्कर जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है. पर बेटा गन्ने को जब शुगर के प्रोसेस में जाएगा तो वो पूरा आपको भी पता है, जब शुगर जूस पीते रहोगे, ओके, गन्ने का जूस पीते हो तो बेटा वो पूरा मलबा होता है उसका, तो वो भी बेचा जाता है. वो वाइन भी यूज करने के लिए, बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है. अभी उसका बहुत सारे यूजेस है. तो बेटा बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, डोंट वरी. मोनू सिंह, वेरी गुड. समझ ले, मैंने 10 यूनिट्स 100 रुपीज पे प्रोड्यूस किए, तो मेरे जेब से 1000 रुपीज गया बेटा. आई पेड 1000 रुपीज. से यस और नो. एंड बेटा आई नो कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट एट 100 रुपीज. तो मुझे ये पता है कि ये 100 रुपया मुझे मेरे जेब से गया, पर मुझे जेब में सिर्फ 90 रुपया आने वाला है. सर क्यों 90 रुपया? भाई मार्केट ही नहीं है, बहुत मंदी चल रही है. सो 100 रुपया आपने इनकर किया, भाई अभी 100 रुपया इनकर किया, वही तो नसीब का पार्ट है. अभी 100 रुपया तो मिलेगा नहीं, 100 रुपये पे मैं बेचने को बोलूंगा. जो मिल रहा है उसको लो और चलो, खिसको यहाँ पे. ओके, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा. 100 रुपए के 100 रुपए का बिजनेस बनू भाई, सोचना पड़ता है. 10 यूनिट्स है, कितने में बेचेंगे सर? 90 रुपीज में. कितने में बेचेंगे? 90 रुपीज में. सो 90 रुपीज इज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो कॉस्ट के नीचे, अरे भाई ठीक है भाई, कभी कभी चलता है, नसीब का पार्ट है, नहीं हुआ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, कम करके छोड़ दो, निकलो वहां से. तो कितने पे रिकॉर्ड किया? 900 रुपीज पे स्टॉक रिकॉर्ड किया. सब बेचा नहीं है, फिर भी 90 पे रिकॉर्ड कर. सो 100 रुपए का लॉस दिखेगा, दिखने दे, है. तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे बताते हैं, और इसको बोलते हैं भविष्य देखना. प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब भविष्य. और भविष्य में जो बेचने वाले हो 10 यूनिट्स 90 रुपए पे, तो उसी से क्लोजिंग स्टॉक को आज रिकॉर्ड करो. सर बेचा किधर है? अरे रिकॉर्ड करना, क्लोजिंग स्टॉक तो रिकॉर्ड कर रहा है. जब बेचेगा तब देखेंगे. तब 93 में बेचा, ठीक है, आज तो 90 लग रहा है ना मन को. अकाउंट्स एस्टिमेट पे चलता है, अकाउंट्स एस्टिमेट पे चलता है. अभी मन क्या बोल रहा है? 90 रुपए पे बेचेगा. सो व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? आज बेचने गए तो जो प्राइस मिलेगा. सो बेचने गए तो 95 रुपीज, 5 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसका क्या? हाथ में कितना आया? 90. नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाथ में कितना आया? पैसा. नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट जेब से गया, रियलाइजेबल वैल्यू जेब में आएगा. कितना आएगा? 100 से ऊपर आएगा, सो फिर 100 पे रिकॉर्ड कर, विच एवर इज लोअर बोला है ना. फिर जेब से 120 आने वाला है, तो 100 पे रिकॉर्ड कर. फिर सर 10 यूनिट्स 100 पे रिकॉर्ड किए तो नो प्रॉफिट नो लॉस. हाँ भाई, अभी तो नहीं होगा, जब माल बेचेगा तब प्रॉफिट और लॉस होगा. पर लॉस होने वाला होगा तो आज बुक कर, लॉस के लिए रुकना मत. लॉस होगा तो आज बुक कर. कौन बोलता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट.
सो ये हमने एक बार बताया था मैंने, प्रूडेंस प्रूडेंस प्रूडेंस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. नाउ यू विल अंडरस्टैंड सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट. नाउ बेटा, डे बाय डे यूर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज. देखो, मसल होता है ना, मसल एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनता है. उसके लिए मेहनत लेनी पड़ेगी. वो मसल का वर्कआउट करना पड़ेगा. मसल को तोड़ना पड़ता है. तब जाके वो फाइबर से रिपेयर होता है. दिमाग का भी वैसा ही है. एक दिन में सीखने वाले नहीं हो. सेकंड यूनिट का इधर से उधर कनेक्शन. फर्स्ट चैप्टर यू विल कनेक्ट विथ हियर. सो इट्स लाइक मसल बिल्डिंग. फर्स्ट ब्रेक इट एंड देन बिल्ड इट. हमें इसको तोड़ना ही नहीं है सर. हमें सब इजी इजी चाहिए. कितना लॉजिकली बताया देखो बेटा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज एक्सप्लेन. कि व्हाट इज द कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट. Unintentionally produce is called as byproduct. So byproduct is we are not going to produce it. So net realizable value recorded at only selling price minus selling expense. Selling price minus selling expense. Got the concept? So cost or NRV whichever is lower, it is called as, it is called as prudence concept. चाहटे वाला सांग ना. It is called as prudence concept. Got the concept बेटा? हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन है, कोई शक सवाल? You can ask me within a minute. So main product intentionally produced. Cost or NRV which is lower पे record करेगा सर मैं. And if it is not intentionally produced, we are going to record it at net realizable value, sir. So 10 का लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बेटा. ऑटोमेटिकली लॉस दिखेगा. 100 रुपए डेबिट साइड, 90 रुपए क्रेडिट साइड, अपने आप 100 रुपए लॉस दिखेगा. हाँ जी बेटा. यस. शुगर केन से मोलेसेस. नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ये आज का स्क्रीनशॉट वन है रही है. स्क्रीनशॉट वन. बेटा, इन्वेंटरी इज नॉट वेरी सिंपल. Don't take this chapter lightly. This is one of the difficult chapter, beta. Net realizable value, raw material, replacement price, WIP. इंटर में सीखोगे, इंटर. S2 CA इंटर में सिखाऊंगा. वर्क इन प्रोग्रेस, इंटर. फिनिश गुड्स. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो आधा अधूरा है बेटा, जो कंप्लीट ही नहीं हुआ कभी. आधा अधूरा, नॉट 100% कंप्लीटेड. फिनिश गुड्स, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस. स्क्रीनशॉट नंबर 2 आज का. स्क्रीनशॉट नंबर 2. आई होप सेलिंग एक्सपेंस का मीनिंग समझ में आया. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन, एक्सेट्रा. प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन.
interest cost, storage cost, and packing expense. See, interest is never added in your inventory valuation. Raw material, direct labor, direct expenses, factory overhead, factory overhead. So we are going to add only these four expenses. Interest cost we never add. Interest cost is never considered in the inventory valuation. Administration overhead is not considered. Selling and distribution is not considered. Similarly, interest, whatever loan you are paying, interest ready cost is not added to your closing stock valuation. But there is a one exception, qualifying asset. Now, what is qualifying asset? Suppose if that inventory is taking a long time to get ready for its intended use, कोई इन्वेंटरी बनने के लिए टाइम ले रही है, सब पेन पेन एक दिन में तैयार होगा. वाइन जितनी पुरानी उतनी अच्छी. सो वाइन इज टेकिंग अ टाइम टू गेट रेडी. एंड बेटा वाइन जो है, and for that, suppose if that is a qualifying asset, you are selling wine, and for that, beta, you have taken a loan. So such loan interest is added. So that is the exception. Okay. For example, my wine cost is 1 lakh, and interest on this I paid 10,000. So my total cost is 1,10,000. मेरी total cost कितनी है? Wine की 1,10,000. Okay, interest I will add. Why? Because wine is a qualifying asset. What is qualifying asset? An asset which takes substantial time. For business purpose होगा, no. But for on qualifying asset means asset takes time to get ready. जो एसेट टाइम लेती है रेडी होने के लिए, उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट. इज एडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. स्क्रीनशॉट नंबर 3. Screenshot number 3. So interest, remember, is never considered, but it is on qualifying asset. Qualifying asset means an asset which takes substantial time. S16 बोलते हैं उसको. रिप्लेसमेंट प्राइस बेटा इंटर लेवल, दिव्या बताया ना मैंने, इंटर में सीखेंगे. इंटरेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड. हाँ बेटा, बट ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंटरेस्ट इज एडेड. नेक्स्ट, storage cost, warehouse expenses. You know, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, big godowns, and you have to pay rent. So whether this rent is added in closing stock value. So beta, you have to see whether rent is related to raw material, WIP, or finished goods. If raw material and WIP rent is considered as a part of closing stock, so rent you are paying is a raw material, and finished goods don't consider. Okay, because it is treated as a finished goods. After becoming finished, beta, it is only for dispatch purpose, distribution, and therefore it is not considered. So storage cost, beta, IMP, storage of raw material and WIP. If you store some raw material and WIP in your godown, then whatever storage you paid, whatever rent you are paying is also added, like raw material, wages, direct expense, factory overhead. Administration overhead, no. Selling and distribution overhead, no. Interest only on qualifying asset, not interest on other assets, no. And finished goods storage cost is also not considered. Finished goods ka storage cost is also not considered. It is only for general knowledge, beta, I am telling you. Screenshot number 4. Yes, storage cost. Wait. So storage cost को consider करना है. And last one, beta, before break, packing expenses. Now, packing expenses, see the primary packing, which is mandatory. Beta, without that, it's not possible. So, primary packing होगा, light गया beta. Primary packing होगा, so you will consider compulsory and to attract and advertise. Primary packing consider, and secondary means to make it attractive. Don't consider. So packing में भी दो चीजें हैं. एक primary packing you will consider, secondary packing you won't consider. Okay.
सो नाउ टेक अ ब्रेक। चिराग ब्रेक ले लो। एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीनशॉट नंबर 5 ना बेटा? हाँ, 5। Screenshot number 5. Primary packing, consider. Secondary packing, don't consider. So before break, beta, you write, you please revise all these concepts of principles of inventory valuation and we will take a break. Break के बाद हम लोग मिलेंगे लेके नया concept. So we are going to meet at 12:25. 10 हुआ है ना? 15 minutes. चलो, take a break बेटा. Yes.
सो बेटा क्विकली रिवाइज दिस. व्हाट अबाउट इंटरेस्ट कॉस्ट? चलो फटाफट 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 देखो, फटाफट याद करने का. इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या करेंगे? वी विल नेवर कंसिडर इट इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट. बट सपोज इफ इट इज इंटरेस्ट इज ऑन द बोरोइंग कॉस्ट, इज ऑन क्वालिफाइंग एसेट. क्वालिफाइंग एसेट मीans asset which takes a substantial time to get ready for its intended use. Then better that interest will be added to your inventory valuation. So what about storage cost? So storage cost, if it is on raw material and WIP, we'll consider it. But if it is on finished goods, don't consider it. And last one. So last one is what? What is the last one? Last is that your packing is primary packing, then beta we will consider it. But suppose secondary packing, we will never consider this. And now we are going to see very important part, methods of inventory valuation. आवाज कमी करा सांग ना. Inventory valuation, methods of inventory valuation. Yes, now this is the last part, and day after tomorrow it's an action part, beta. Action part. Yes, on Monday what we are going to see, please solve all illustrations of study material. आज मैं पूरा explain कर दूंगा. So today beta we are going to end up with this chapter's explanation part, and day after tomorrow on Monday what we are going to start with, illustrations of inventory valuations. Okay. हाँ जी बेटा, चलिए. So याद करो, what is inventory? Inventory means raw material, WIP, finished goods. एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. याद आ रहा है क्या? नहीं, देखते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट. टोटल इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ओके. Elements to be considered, only raw material consume, then you have wages, direct expense and factory overhead. Don't consider administration overhead and selling and distribution overhead. What about COGS? COGS is of finished goods. How it is calculated? COGS is equal to opening stock of finished goods plus production minus closing stock of finished goods. And it is trader, then better instead of production, he purchases. Sir, how to calculate raw material? Raw material consumption. See, this is how you have to revise your concepts. Raw material consumption, WIP production, finished goods, COGS. Okay, raw material consumption, opening stock of raw material plus purchases plus direct expenses related freight वगैरह उसमें ऐड होगा minus closing stock of raw material. Then बेटा WIP. WIP is raw material opening WIP plus raw material consumed. Then बेटा labor, direct expenses, factory overhead less closing WIP. फिनिश गुड्स प्रोडक्शन आएगा, इससे प्रोडक्शन मिलने के बाद सीओजीएस. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यस, इज इक्वल टू सीओजीएस. इन्वेंटरी सिस्टम पीरियोडिक, perpetual. Periodic on 31st of March. Perpetual, continuous. So you won't understand normal loss and abnormal loss in periodic. But perpetual will give you actual difference. Okay, book value and physical stock. Might be there is a difference. Types of product, main product, byproduct. Main product is recorded at cost or NRV, whichever is lower. And byproduct is recorded at NRV. Okay. Principles of inventory valuation. Interest cost not considered except qualifying asset. Then storage cost only of raw material WIP. Finished goods are not considered. And what about packing? Packing may primary packing and secondary packing will be, primary packing will be considered, secondary packing will not be considered. And this is how. And normal loss, abnormal loss. Normal loss is absorbed by good units and abnormal loss is recorded at cost per unit. Normal loss is at scrap value, abnormal loss is at cost per unit. Got the concept? Ekdam easy hai beta. So all concepts are over within 4 to 5 minutes. यस, कुछ याद आ रहा है क्या? यस, क्विकली रिवीजन. यस, व्हाइल डूइंग द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. चलो जल्दी से बताओ. ऑल 9 पॉइंट्स ओवर एक्सेप्ट मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी. 10th है ये. सर जी पूरा याद करने का. दिस इज हाउ यू हैव टू डू रिविजन्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. और एक बार स्टडी मटेरियल चेक करने का. स्टडी मटेरियल देखने का ऐसे. स्टडी मटेरियल ऊपर ऊपर सर ने सब कुछ तो कवर किया ना, देखने का ऐसे. किसी से भरोसा मत रखिए एक्सेप्ट योर स्टडी मटेरियल. ऐसा बेटा पढ़ने का. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी. Meaning for sale in ordinary course of business, finished goods, in the process of production, WIP, for consumption, raw material. फिर inventory valuation.
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ये भी बताया था, ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एनालिसिस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, बेसिस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। सर याद है सर, कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेसेस में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है, अदर कॉस्ट में क्या आता है, एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स में एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट सब बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सब कुछ बताया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल, डिफरेंस। यस सर, क्या मस्त एक्सप्लेन किया है, ये बच्चा है। मेथड्स ऑफ, यस ये बच्चा है, ये एक्सप्लेन करूंगा अभी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। और उसके बाद मेथड्स के बाद नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एंड इन्वेंटरी टेकिंग, इट्स द लास्ट पार्ट बेटा, ये आपको प्रॉब्लम के माध्यम से बताऊंगा। एंड ओवर, टॉपिक इज ओवर। यस, 2 दिन से लगातार मेहनत एंड देन बेटा 100% अंडरस्टूड व्हाट इज इन द चैप्टर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। यस बेटा कार्तिक, you made it very easy. Yes, I know that. And when you read from the study material, every one of you, beta, this chapter is difficult one. Yes. But how to make it simple? By understanding each and every concept. Detail में बताया है. Raw material consumption, WIP, production, finished goods, COGS. बस चीजों को याद रखो. Randomly बोलते रहो. और बोलते रहोगे तो याद रहेगा. Okay? चलिए. So now I am at the last part. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है. Methods of inventory valuation. How many methods are there? See, methods are basically divided in 2 parts. You can see here. चार्ट देख सकते हो आप. चार्ट में देखो. Here, methods are divided in 2 parts. Historical method and yes, यहाँ पे है historical, non-historical. यहाँ पे है historical. Okay, historical method and non-historical method. चलो बहुत बढ़िया करते हैं फटाफट. Historical method में क्या होगा? Not interchangeable. So not interchangeable. What is not interchangeable and what is interchangeable? So here main points, 2 points, not interchangeable, interchangeable. समझ में आ रहा है क्या आपको? Not interchangeable and interchangeable. Okay. So what is not interchangeable? For example, बेटा फॉर एग्जाम्पल देने के लिए, हाँ जी बेटा, सपोज दिस 2 पेन्स आर बेटा सेम पेन्स, सेम पेन्स. ओके, अभी आई बॉट दिस पेन एट 100 rupees and I bought this pen as 150 rupees. Okay, same pen are there. 100, 150. Abrakadabra, 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 abrakadabra. Pen. Yes, beta. कौन सा 100 पे लिया था and कौन सा 150 पे लिया था? Because these pens are getting exchange, mix. And beta, if these 2 pens having different colors, this is at 100 and this is at 150. I can, yes beta, abrakadabra करके भी nothing is going to happen because I know this pen is at 100 and this pen is at 150. You cannot mix it because prices are different, colors are different. If pens are not interchangeable, so it's very simple. Okay. What is the simple? Yes, simply you can calculate the price, specific identification method. Then beta, which is the method? Specific, you can specifically identify the price. If there is a tag on that pen, तो बेटा प्राइस टैग होगा तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई को हो जाएगा कि मैंने कितने में खरीदा था. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन व्हेन देयर बेटा गेटिंग मिक्स हो गए. तो देयर आर 4 मेथड्स. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट. इट्स वेरी सिंपल. लास्ट इन फर्स्ट आउट, weighted average and simple average. So there are total historical में 5 methods. Not interchangeable, interchangeable. Not interchangeable means there is a price tag, specific identification method, specific identification method, specific identification method, specific identification method. Try to learn these concepts. Okay, specific identification method. Okay, historical and non-historical.
Then interchangeable. Interchangeable means first in, first out, last in, first out, weighted average and simple average. चार मेथड्स है. First in, first out, last in, first out, weighted average, simple average. Got the concept? चलो yes or no? चलो लिखो जल्दी से. Historical method में there are five methods. Non-interchangeable one and interchangeable. FIFO, LIFO, WA, WASA. FIFO, LIFO. Don't write full names. And SIM, specific identification method. Okay, SIM, FIFO, LIFO, WASA. चलो लिखो. You must know this method, beta. स्वरूप थैंक यू बेटा. योर पीपीटीज आर ऑलवेज बेस्ट. बेटा बहुत मेहनत करता हूँ ना. ओके सर, मेरा आईडी एसएसपी पोर्टल पर इनवैलिड बता रहा है बेटा. आई कांट हेल्प यू आउट. जय किशन, सॉरी फॉर दैट. So interchangeable, not interchangeable. When they are getting mixed, then how to identify which lot? Then FIFO, LIFO, weighted average and simple average. ठीक છે? Specific SIM, FIFO, LIFO, WASA. Okay? Now what is the concept? What is the conceptual? Yes, चलो concept को समझ लेते. Okay. Now, lot 1, lot 2, lot 3. Chaitra ji is not possible. You can take screenshots and you can write it afterwards. Suppose lot 1. Yes, we'll solve it from your study mat only. Study mat में से ही solve करेंगे sir. हाँ जी बेटा. See, first January, suppose quantity and rate. This is the first lot. 100 units, 30 rupees. Then beta, this is beta receipt, issue, balance, receipt, balance. So purchases 100 units and 30 rupees. And consumption. Now this is beta lot 1. Lot 1, you bought at 30 rupees. So these units I bought it at 30 rupees. Okay, so I issued 50 units out of this. Issued कितना हुआ? 50 units. Now lot 2, I purchased on 200 units, 40 rupees. First Feb, 200 units, 40 rupees. Okay, so 200 units, I bought it at what price beta? 40 rupees. Okay,
200 units at 40 rupees. Then issued for consumption, 100 units. Now first in, first out. Lot वन, फर्स्ट लॉट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसमें से जाएगा. सो ये 50 फर्स्ट इसमें से जाएगा एंड रिमेनिंग 50 आउट ऑफ सेकंड लॉट. तो देखो, ये लॉट वन में से गया फर्स्ट 50. देन बेटा दिस 100 यूनिट्स लॉट वन में से गया, लॉट टू में से भी गया, एंड दिस इज टोटली फ्रॉम लॉट टू. माइनस 100, 0 and 50 units. 0 and 50 units. Okay. So lot 2 में से 0 and 50 units. तो बेटा ये जो है 0 and 50 units we left with. So my closing stock will be recorded at 50 units into 40 rupees. This is called as 2000 first in, first out. First in, first out. See beta, this is how you are going to record this. So units, see first in, first out. तो लॉट वन में से जाएगा या लॉट टू में से जाएगा, लॉट वन में से जाएगा या लॉट टू में से जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो हियर देर इज ओनली वन लॉट. Then after for next 100 units, it is from lot 1 50 units and lot 2 50 units, and remaining lot 2 100 units. So balance 0 50. Okay, and balance is recorded at 50 units into 40 rupees. Khatam. It's very simple. Tata, bye bye. So ये हो जाएगा lot 1 and lot 2, last in first out and first in first out. Now you only tell me if it is last in first out, how to calculate. चलो last in first out है, last in first out. बताइए what will be the answer. First in first out is very simple. Yes, first इसमें से. चलो करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट करो बेटा. चलो बेटा,
Lot 1, lot 2. Yes, last in, first out. 1st January, receipt. How many units? 50 units. Sorry, 100 units at 30 rupees. So 130. Issue. Next is issue. 50 units minus. Now this is lot 1. Now on 1st Feb, you have another lot, 200 units, 40 rupees. Lot 2. 15th Feb, 100 units beta, you sold. So last in, first out. Last lot is lot 2. So minus 100. So इधर आपका 100 बच गया. 200 minus 100, 100 quantity left. And 20th Feb is also against lot 2 because lot 2 का 100 बाकी है. So lot 2 is 0 now and lot 1 50 units. So your answer will be balance 50 units at 30 rupees. So your closing stock value is different under LIFO method. FIFO method में कितना था? 2000 and LIFO method में you are getting answer 1500. So last in first out gives you different answer. First in first out gives you different answer. See the inventory policy you are selecting. Once you selected FIFO, so you have to be stick to FIFO method. You can change it if it is required by law, if it is required by statute, or it is required by the accounting standard, or it is required by the for better presentation. All your competitors are using another method and you are using another method is not allowed. So for better presentation. So first in, first out, or second method is last in, first out. But in accountancy beta, last in, first out is not allowed. Okay. S2 gives you only two methods, FIFO and weighted average. But you must have the knowledge of other two methods, that is LIFO and simple average. Both are not allowed in India, but beta, we must have knowledge of two methods. In India, which two methods are allowed? Only FIFO and WA, weighted average. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अलाउड एंड वेटेड एवरेज इज अलाउड. देखो बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या होगा? देखो मैंने पहले कितने की इन्वेंट्री ली, एक बार हिंदी में समझ लो. एक बार हिंदी में समझ लो. अभी पूरा एकदम इजी है बेटा, कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा, इतना इजी है. देखो वो क्या बोलेगा, 1 जनवरी को मैंने पहला लॉट लिया था, लॉट 1. कितने का लॉट लिया बेटा? लॉट 1 100 यूनिट्स 30 रुपीज से, 30 रुपीज से लिया. फिर उसमें से मैंने कंजम्पशन के लिए कितना निकाला? 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स निकाला लॉट 1 में से. मतलब लॉट 1 में कितने यूनिट्स बचे? 50. फिर 1 फरवरी को बेटा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, एक लाओ कर. 1 फरवरी बेटा 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स ये अपने लिए 40 रुपीज से, 200 यूनिट्स 40 रुपीज से. सो लॉट, यस बेटा लिखिए, लॉट 2